my channel. This tutorial is on request of my really enthusiastic and hardworking and sincere student Annie Khan, who is basically a real lover of foil artwork. So after every few videos she pops up into my list that very nice, please more of foil work. So I'm doing this tutorial for you Annie. Hope you like it. एनी खान की रिक्वेस्ट पर मैं ये ट्यूटोरियल बना रही हूँ और ये मेरी बहुत ही अच्छी और मेहनती स्टूडेंट हैं जो कि हर थोड़े दिनों बाद मुझे फॉइल वर्क के काम के लिए रिक्वेस्ट करती हैं और पूछ करती हैं कि जो है इस पर दोबारा से एक वीडियो बनाई जाए कोई नई आइडिया के साथ। तो मैं जो है ये वीडियो उन व्यूवर्स के लिए भी बना रही हूँ, एक तो एनी खान के लिए हो गई, दूसरा उन व्यूवर्स के लिए भी है जिनको मेटल एल्युमिनियम फॉइल नहीं मिल रहा। So I'm going to make this video for those of my viewers as well who are unable to find metal on aluminium foil. So in this tutorial I'm going to use food wrapping foil sheet. मैं इस ट्यूटोरियल में फूड रैपिंग फॉइल शीट को यूज़ करूँगी। डू द स्प्रे पेंट एंड लेट इट ड्राई। इस पे स्प्रे पेंट कीजिए और इसे ड्राई होने के लिए रख दीजिए। Now what you have to do is to take a glue gun, hot glue gun and start drawing from it. आपने ग्लू गन से डिज़ाइन बनाना शुरू कर दिया। to simply apply Mod Podge. अब आप लोग क्या करेंगे, इस पे कुछ भी नहीं करना है, आपने जो है इस पे जर्मन वाइट ग्लू को अप्लाई कर देना है। Now take aluminium foil food wrapping sheet. अब आपने aluminium foil की food wrapping sheet ली and start fixing it. Again, when there is a foil, you will going to use a blunt pencil. आप जो है जब भी foil work करेंगे एक मोटी नोक वाली पेंसिल, ब्लंट पेंसिल को यूज़ करेंगे। फिक्स इट, इसको फिक्स कर लीजिए विथ सॉफ्ट हैंड्स। डोंट प्रेस इट हार्ड, इसको ज़्यादा सख्ती से नहीं प्रेस कीजिएगा, सॉफ्ट हैंड से प्रेस करें एंड देन लेट इट ड्राई और इसे सूखने के लिए छोड़ दें। It is all dried, ये सूख चुका है। Now what you are going to do is to take a cutter. आपने इसके बाद क्या करना है, कटर लेना है और इसको काटना शुरू कर देना है।
it is done. Now when you see the close-up, you will find that marks. This is due to glue. So I'm going to clean that off by using any paint. You can use a poster paint because I'm going to use a lacquer spray on it after it is dried. ये जो वाइट मार्क्स हैं ये ग्लू की वजह से हैं और इसको मैं क्लीन जो है वो ब्लैक पोस्टर पेंट से कर रही हूँ। ये इसलिए कि जो है मैं इस पे लैकर स्प्रे कर दूंगी जिसकी वजह से ये फिक्स हो जाएगा। तो आप कोई भी पेंट यूज़ कर सकते हैं। tada, it's ready. Now I'm going to spray paint it with lacquer spray. अब मैं इसको लैकर स्प्रे से स्प्रे पेंट कर दूंगी। To give it a perfect more shine. So hope the problem will be solved for those who can't find out aluminium metal foil. उम्मीद है जिनको aluminium metal foil नहीं मिल रहा था कि मुश्किल आसान हो गई होगी। So don't forget to tell me in the comment box that how would you like the tutorial. आप लोगों को ये tutorial कैसा लगा इसको बताना ना भूलिएगा। Make it your jewelry box or sewing box or any storage box, but the box will be turned into that beautiful masterpiece. So don't forget to like, comment, share and subscribe. Meet you in next tutorial. Till then, Allah Hafiz.